Aham Brahmasmi, love to everybody. Some few milestones which I have to speak on in our journey of life. कुछ ऐसी बातें जो हमारी ज़िंदगी के मील के पत्थर हैं हमारी जीवन यात्रा में समाधि की ओर। पहली चीज़ है अनंतता को पाना, जेनेटिक इंजीनियरिंग, प्रोग्रामिंग, साइंटिफिक भौतिकवाद के थ्रू, जिसको हम केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फ़िज़िक्स कहते हैं। दूसरी तरीका ये है अनंतता को पाना जो सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, और उसके साथ साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग का भी प्रयोग करना, जिसका लेना देना कैपिटलिज्म से है, जिसका लेना देना भौतिकवाद और पैसे के लेन देन से है, राजनीति से है, जिसका लेना देना अंतरतम पशुता से है। तीसरा, अनंतता को पाना सात्विक तरीके से, योग, ध्यान, साधना, जिसके अंदर जेनेटिक साइंस भी इंक्लूडेड है, सामाजिक विज्ञान जो कि योगा, स्पिरिचुअलिटी और धर्म के आधार पर ही जो सोशल साइंस है, वो सोशल साइंस डायरेक्ट है, उसमें कोई भी भगवानवाद या कोई भी मूर्ति पूजन या कोई भी धर्म प्रचार नहीं है। वो सीधा शुद्ध अंतर्विज्ञान है जो योग से शुरू होता है, अचेतनता से चेतनता की ओर। ये है एक मील का पत्थर। दूसरा मील का पत्थर जो इसी पर आधारित है वो है बिलीफ सिस्टम या शून्य बिलीफ सिस्टम। बिलीफ सिस्टम से पूर्णता मुक्ति और शून्य बिलीफ सिस्टम जो कि आधार बनता है अंतर्विज्ञान योग के लिए। ये दूसरा मील का पत्थर है। तीसरा जो है, जिसको हम कहते हैं बहुत ही बहिर्मुखी राजनीतिज्ञ दृष्टिकोण है, पर अगर हम उसको वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक तरीके से देखें तो वह भी अंतरतम समाधि की ओर ले जाने वाला पूर्ण चक्र है, जिसका आधा चक्र श्रमिकों से बनता है और उसका जो पूर्ण आधार है वो ब्राह्मणों से बनता है। दोनों एक दूसरे की गैर हाजिरी में अपूर्ण हैं। ये कोई जाति नहीं है, ये एक जीने का तरीका है जिसमें श्रमिक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और ब्राह्मण होना उसकी भी इम्पोर्टेंस है जो सेकेंडरी है। ये है तीसरा मील का पत्थर। So the same thing I'm going to talk about in English language is that the way we are actually actualizing our immortality through genetic programming, reprogramming our internal body scientifically, materially, chemically, is one way of trying to do the impossible, which is actually impossible because change is eternal. But this is coming from our pseudo thinking, pseudo incomplete analysis. It is a kind of retarded analysis, but 99.99999 and so many nines you can put on kind of intellectualism going on in our world, in our present situation. The second way to attain immortality through criterias of introverted science, psychology, psychosomatic science, through the effort to attain to meditation, through yoga, spirituality, religion.
hard work, and a lot of beingness. So this is one part of our milestone. The second is the belief system. The belief system which comes from pseudo programming to attain to no belief system, or let us say zero belief system. This is to attain to meditation. So we have to cover up both the parts, the belief system and to be free of belief system. So we can do this consciously, deliberately, to attain to consciousness and superconsciousness. This is the second milestone human race has to attain to educationally. The third milestone is of the achievement of two parts of ourselves, the feminine and the male. The feminine consists of the Brahmanism, the Brahman. It's got nothing to do with caste. It's got nothing to do with religion. It's a pure science of beingness, zeroness, which lets you go into the experience of yourself as vastness, as Aham Brahmasmi. But this part is secondary. The first part is inclusive of hard work. This hard work is to be attained through transforming your first pseudo part. When the pseudo viscous circle, the viscous circle in which our pseudo lifestyle, pseudo definitions of life are being transcended, only then our life starts with hard work, which is called Sramik. The Sramik, the hard worker, then achieves the second stage of Sravan, listening to the existence, listening to the existential synchronicity, feelingful voice, the sensitive, the super sensitive, intelligent inner voice, synchronized with the entire existence as oneness. Then the third is attained as the mystic, the Brahman, the Brahma. That is the eternal energy. It is the science. But the name itself brings in our thoughts of caste system and religion. But it is not. It is strictly not. And it is a third stage anyway. So we have to attain the first two. In fact, we can say the first three. First, to realize that we are living a pseudo life, we have to come out of it. The second is hard work starts with a new life. The third is to attain to listening. So these are the three milestones of our lifestyle. The first, as I said, is the genetic engineering, inclusive majorly of psychologically active into meditation, from sex to superconsciousness, from ego to superego, and so on. And the second is the belief system and going beyond all belief systems to deconditioning, the survival beyond conditions. The third is, as I said, is the awareness of our inner animal lifestyle and coming out of it, the hard worker, and the listener, the state of rest. And the fourth is achieving to our vastness. Thank you. प्यार सबको लव, अहम ब्रह्मास्मि.